Hello, hi. Welcome to your English class. I'm Rashika Singh, your instructor for English. So, in today's video, we are going to discuss some grammar portions. Grammar is important for you regardless of your class, regardless of your age. And a lot of people have difficulty in grammar throughout their lives. They make mistakes while forming sentences, they make mistakes while writing, while speaking. So, grammar is an integral part of any language, no matter what your language is. Grammar plays an important part over there. So, in today's video, we are going to discuss about sentences. That is the most basic and the most essential part of any language, right? So, we are going to discuss about sentences in today's video. So, we are going to talk about sentences over here. Now, अगर मैं आपको पूछूं कि सेंटेंस होता क्या है तो यू वुड से कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, दिस इज द इजिएस्ट थिंग. और बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10 स्टूडेंट्स ओवर हियर, रिलेटिवली सीनियर क्लासेस, तो आप लोगों को पता है कि व्हाट इज अ सेंटेंस फॉर्मेशन, राइट? यू हैव अ होल्ड ओवर लैंग्वेज, क्योंकि आप बहुत टाइम से लैंग्वेज सीखते आ रहे हो, आप बहुत बचपन से इंग्लिश सीखते आ रहे हो. इट इज a language which you are using in your day-to-day life, right? So for that reason, you know what are sentences for sure. But so I'll be sharing this video which I had created for doing while I was working with some kids at an NGO, and I had created this video for them under YEF. Okay, so coming back to what are sentences. So now that you have worked for languages, you have worked with languages for a long time now, you know that what is a sentence in any language, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, you know what a sentence is. तो अगर मैं आपको डिफाइन करने के लिए बोलूंगी कि what is a sentence, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि it is a group of words. ठीक है, but saying that it is a group of words is not enough. ठीक है, उसके साथ साथ आपको कुछ और भी बताना होगा. ठीक है, a group of words is just an incomplete definition. ठीक है, तो उसके साथ आपको क्या डालना होगा कि a sentence is a group of words that express a complete thought. ठीक है, a sentence वो चीज होती है जो कि सिर्फ वर्ड से नहीं बना होता, मतलब कि एक वाक्य सिर्फ शब्दों से नहीं बना होता है. ठीक है, उसका कुछ मतलब होना चाहिए. ठीक है, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए. So that is what the sentence is, that it should give you the complete meaning and thought of what you are speaking, of what you are trying to communicate. See, what is language first of all? Language is a way in which you communicate to other people around you, right? Language is a way in which you can एक्सप्रेस व्हाट यू आर फीलिंग. जो थॉट्स आपके अंदर रॉ हैं, जो थॉट्स आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में चलता है, वो आप दूसरे लोगों तक कैसे कन्वे करते हो, उसके लिए यू रिक्वायर लैंग्वेज, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर सेंटेंसेस. सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड से कैन वी एक्सप्रेस आवर थॉट. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड वाटर, सो इफ यू ओके, सो coming back, I hope all of you, I hope my voice is and the screen is visible to everyone. So we were talking about sentences, right? So what is a sentence? So a sentence is something that should give out a complete thought. And I was giving an example of water, that if you say water, water in itself is a complete word. We know what water is, we know what image water creates inside our mind. But what do people understand? Okay, whether for what purpose do you need water? Will someone understand if you do not say? No, right? So if you say, please, can I have some water? Then someone will bring some water for you and you can have it for, you can drink that water. So that is a complete sentence. So जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, whenever you are making a sentence, you need to be careful that whatever you are trying to express, it is a complete thought. ठीक है, जो आप बोल रहे हो, that should be in a particular order. अगर आप बोलोगे
some water, give please. Okay, that is not a correct sentence, even though the words that are using are correct, even though the words that you are speaking are correct, but what you are speaking is not correct. So a sentence is a group of words which express a complete thought. Okay, उसमें arrangement होना चाहिए, ठीक है, that should have arrangement in it. That is the first thing. We should be able to arrange whatever you are trying to say. Fine. Okay, a sentence needs to have a word which is a doing word. From your childhood you must have read about verbs, ठीक है, कि verbs are known as doing words, ठीक है, मतलब any word that describes your action is your डूइंग वर्ड. ओके, तो डूइंग वर्ड क्या होता है? वो वर्ड्स जिससे आप पता चले कि आप क्या काम कर रहे हो. व्हाट यू आर डूइंग इज डिस्क्राइबेबल बाय समथिंग व्हिच इज नोन एज वर्ड. ठीक है, तो अ सेंटेंस नीड्स टू हैव अ वर्ड. ठीक है, इट शुड हैव अ डूइंग वर्ड इन इट. इट शुड बी एबल टू टेल कि आप कर क्या रहे हैं. ठीक है, and then the next thing is कि a sentence needs to have a subject. It should be about someone or have something in it. ठीक है, मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हो या आप किसके बारे में बात कर रहे हो, whether it is a person or whether it is a thing, दोनों ही केसेस में. ओके, या दोनों में से कोई एक केस एक सेंटेंस में होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस होता है इट कैन नॉट बी विदाउट एनी मीनिंग. ठीक है, इट कैन नॉट बी without a person or without a topic. All sentences have a person in it or either they have a topic in it. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे. ठीक है, या फिर टॉम इज प्लेइंग आउटसाइड. These are very simple sentences. So now that you are grown up kids, you can make even a tough sentence. Okay, that the sun was shining brightly in the sky and it is a very hot day. ठीक है, सो इवन दैट इज अ सेंटेंस. सो नो मैटर आप कितना भी लंबा सेंटेंस बनाए, एज लॉन्ग एज योर सेंटेंस इज गिविंग आउट दैट थॉट. ठीक है, एज लॉन्ग एज योर सेंटेंस इज कन्वेइंग द मीनिंग, आप कन्वे कर पा रहे हो सामने वाले को व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, देन दैट इज द then that sentence is absolutely correct and perfect. ठीक है, अब grammatically we can classify sentences into थ्री फॉर्म्स. ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है, SCC. ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है कि जो ज्यादा लंबे नहीं होते, यूजुअली शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, यूजुअली जिसमें हम फैक्ट्स बताते हैं, यूजुअली वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ज्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं करते हैं. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज अ वेरी शॉर्ट एंड अ स्वीट सेंटेंस जिसमें आप यूजुअली फैक्ट या कोई ट्रूथ या फिर ऐसे कोई स्टेटमेंट देते हैं. ठीक है, फॉर दैट वी यूज सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, ऑल्सो यू मस्ट हैव हर्ड योर टीचर्स सेइंग कि वेन एवर यू आर राइटिंग एन एग्जाम राइट सिंपल सेंटेंसेस. तो वो सिंपल सेंटेंसेस लिखने के लिए क्यों बोलते हैं? ताकि आप कम से कम ग्रामेटिकल एरर्स करो. एंड दिस इज समथिंग विच इवन आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप किसी पैराग्राफ को लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ essay or anything like that, you should always go with simple sentences. If you're not confident with grammar, if you are not confident with the right words, if you do not know the right words, then in that case you should definitely go with simple sentences. You should try to write very short and very precise sentences. It's okay अगर आप बड़े words उसमें use नहीं करें. It's okay if you do not have a very fancy vocabulary over there. That's totally fine. But अगर आप simple sentences लिख रहे हो, that should be the only thing you need to do is कि आप जो लिख रहे हो उसका आपको आइडिया है एंड जो आप लिखोगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट ही होगा. ठीक है, then there is compound sentences. Now, because you are in class 10th, I know कि you would have done chemistry and उसमें आपने किया होगा elements and compounds. ठीक है, तो what are elements? Elements are the purest of the pure substances. ठीक है, जिसको आप किसी और दूसरे particular
जिसको अगर आप तोड़ोगे तो सेम तरह के एटम्स निकलेंगे, राइट? एंड व्हाट इज अ कंपाउंड, कि अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो दो डिफरेंट एटम्स निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज H2O, तो उसको आप तोड़ोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है? या सॉल्ट इज NaCl, तो उसमें से सोडियम और क्लोरीन निकलेगा, ठीक है? तो दैट वाज द केमिस्ट्री that I said, but basically I'm giving you the example to make you understand कि compound sentences are also the same thing, ठीक है? compound sentences में भी दो particular sentences add होते हैं, just like हमारे compound, जस्ट लाइक हमारे केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होता है वो 1+1 या 1 2+2 या जो भी है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है वैसे होता है। सिमिलरली कंपाउंड सेंटेंसेस में भी देयर कैन बी a group of sentences, a number of sentences added together, ठीक है, ऐसे। तो दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो दो तीन चार इतने सारे सेंटेंसेस अगर साथ में अटैच्ड है, बट यूजुअली दो सेंटेंसेस एडेड होते हैं, ठीक है? अगर हम कंपाउंड सेंटेंस हमें क्लासिफाई करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज जस्ट 2 सेंटेंसेस, ठीक है? अब वो कैसे बनता है वो हम आगे चल के देखेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है? तो द थर्ड पार्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज जहां पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, एंड जहां पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस से एक एक के बाद एक हर एक थॉट दे रहे हो, ठीक है? तो उसमें आप बहुत सारे सेंटेंसेस को साथ में अटैच करते हुए जाते हो, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एग्जाम्स में लिखना अवॉइड करना है इफ यू डू नॉट वांट टू मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। फेयर? So those were three types of sentences. Okay, simple, compound, and complex. Now coming to the first part, what is a simple sentence? So a simple sentence is also called an independent clause. Okay, it contains a subject and a verb and expresses a complete thought. ठीक है, तो a simple sentence is also called an independent clause. Independent मतलब कि simple sentence में हम usually कोई रिलेशन नहीं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये होगा तो इसके बाद ये होगा। सिंपल सेंटेंस में एक कंप्लीट थॉट होता है जो कि एक ही सेंटेंस के अंदर कन्वे हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आप दूसरे थॉट के लिए वेट नहीं करते, यू आर नॉट वेटिंग फॉर द अदर थॉट टू कम इन। व्हाटएवर you have said has been said in one single sentence only, so that's why it's an independent clause. जब आप एक सिंपल सेंटेंस लिखते हो that is complete within its own self and you do not have to add or subtract anything after that, ठीक है? तो इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, ठीक है? तो तीन चीजें इसमें भी होंगी, ठीक है? एक तो सब्जेक्ट होगा हमारे पास, एक हमारे पास वर्ब होगा, और एक हमारे पास होगा कि जो थॉट है वो उसमें से पूरा निकल के आ रहेगा, ठीक है? कि उसमें जो सब्जेक्ट है कि किस बारे में बात हो रही है, और जो वर्ब है क्या काम हो रहा है, वो दोनों चीजें। फॉर एग्जाम्पल, रवि लाइक्स स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है? तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रवि, ठीक है? अब यहाँ पे वर्ब क्या है? लाइक्स स्टडिंग, ठीक है? टू लाइक इज ऑल्सो अ वर्ब एंड स्टडिंग इज ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है? यहाँ पे मेन वर्ब इज स्टडिंग विच इज टेलिंग अस कि रवि को सुबह पढ़ना पसंद है, राइट? तो इट इज अ सिंपल सेंटेंस, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके आगे और इसके पीछे हमें और कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर कंप्लीट थॉट वी हैड दैट हैज बीन कन्वेड इन दिस सेंटेंस, ठीक है? तो दैट इज व्हाई इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका जो थॉट है पूरा, हमें इससे पता चल रहा है जब हम सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं कि रवि लाइक स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है? दैट इज आवर कंप्लीट थॉट दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर। तो इसके आगे आपको और कोई इंफॉर्मेशन बताने या घटाने की जरूरत नहीं है। फाइन। Then we have compound sentences. So compound sentences contain two independent clauses joined by a coordinating conjunction. ठीक है? तो अभी मैंने आपको बताया कि compounds क्या होते हैं, right? You know कि what are compounds? Compounds are anything that is made up of two or more elements, ठीक है? तो वो तो scientifically होगा, that is in terms of chemistry. But what is compound in English? Compound actually in English means something that is made up of two or more things, that if you break down that thing you will get two different things out of it. Okay, that is a compound. So a compound sentence contains two independent clauses joined by a coordinating conjunction. Okay, I know this language might be slightly difficult for you
for a few people, like such big words, independent clauses. Oh my God, I don't like English. You don't have to worry about it. What you basically need to understand over here is that it has two independent clauses. ठीक है, कि ये जो उसके दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं. तो अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को अलग करके निकालोगे तो दो सिंपल सेंटेंसेस निकलेंगे. ठीक है, अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो उसमें से दो अलग अलग सेंटेंसेस निकलेंगे जो कि अपने आप में कंप्लीट है. बट क्योंकि हम एक ही सेंटेंस के अंदर पूरा थॉट देना चाह रहे हैं, वी डोंट वांट कि हम एक के बाद एक इंफॉर्मेशन दे, तो दैट इज व्हाई वी क्रिएट कंपाउंड सेंटेंसेस. ठीक है, ताकि हम एक ही साथ सारा थॉट कन्वे कर सके, विच इज जॉइंट बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो अब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यूज क्या करते हैं, वी यूज कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए. ठीक है, अब व्हाट आर कंजंक्शंस इन इंग्लिश? तो कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, सिंपल. ठीक है, दीज आर दो स्मॉल वर्ड्स दैट वी यूज फॉर जॉइनिंग द टू सेंटेंसेस टुगेदर. ठीक है, उसको हम कंजंक्शंस बोलते हैं. ठीक है, कंजंक्शंस का काम होता है टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस टुगेदर. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने कि राहुल ड्रोव द कार एंड खुशी रेड द मैप. ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे साथ में ही बता रहे हैं कि व्हाट आर द टू थिंग्स हैपनिंग. यहाँ पे दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, दो सिंपल सेंटेंसेस है. ठीक है, राहुल ड्रोव द कार एंड खुशी रेड द मैप. ठीक है, तो ये कनेक्टेड किससे है, एंड से, राइट. बट अगर मैं इस एंड को हटा दूं, ठीक है, इफ आई एम रिमूविंग दिस एंड, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ दिस सेंटेंस? देयर आर टू सेंटेंसेस दैट आई एम गेटिंग आउट ओवर हियर. Rahul drove the car, full stop. Khushi read the map, full stop. Two sentences. Okay, so these are two independent clauses within themselves. Okay, these are two different pieces of information. Rahul drove the car. Okay, I understood that Rahul drove the car. Fine, I got the meaning out of it. Khushi read the map. Yes, I also get the fact that okay, Khushi was reading the map. But because I need to tell that Rahul and Khushi, they are in the car together. Okay, they are in the car together. That is the reason why I have used and over here. ठीक है, that to specify that this is something which is happening together. This is one single thought. Okay, वरना I can also assume कि Rahul drove the car, Khushi read the map, मतलब दो अलग अलग चीजें हो रहे हैं. नहीं, we have to know कि ये चीज साथ में हो रही है. This is happening simultaneously. This is one single thought. That is why I have used and over here. ठीक है, so that is a compound sentence. और कंजंक्शंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड होगा तो ही कंपाउंड सेंटेंस होगा. कंजंक्शंस बहुत तरह के होते हैं, एंड, बट, इफ, और, okay, then. These are all conjunctions because they connect two sentences. I will have my breakfast, then take up, and then take a bath. Okay, so this is a compound sentence. अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? I will have my breakfast. ठीक है, okay, one piece of information, fine. And take a bath. Okay, so yeah, then take a bath, fine. Like, yes, I know कि ठीक है, take a bath is another piece of information. But because I need to tell कि इसके बाद ये होगा, because I need to tell कि इस thought के बाद ये thought आने वाला है, ठीक है, मुझे दोनों को साथ में बताना है. That is why I am using the compound sentence over here. Fine. Now, next is complex sentences. So, a complex sentence combines an independent clause with one or more dependent clause. तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या था? कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस यही है कि कंपाउंड सेंटेंस जब हम करते हैं तो उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है. ठीक है, अभी बताती हूँ कि वो कैसे होगा. कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, मतलब कोई एक और कंजंक्शन अटैच्ड होगा जो कि पूरे सेंटेंस को मीनिंग देगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, when he finished reading his book, he returned it to the library. ठीक है, now these are two pieces of sentences. When he finished reading the book and he returned it to the library. ठीक है, but why is this a complex sentence? क्योंकि when did he return the book? He returned it to the library. What did he return? We do not know, right? So when he finished reading his book, he returned it to the library. Okay? अब अगर when he finished reading his book बोल के छोड़ दो, what will you understand? When he finished reading his book, then what happened?
उसके बाद क्या, who will give that piece of information, right? That is important over here. तो when he finished reading his book के बाद, क्योंकि ये बताना है कि उसके बाद क्या हुआ, I have to use he returned, he over here with a comma. So he returned it to the library. So when is our coordinating subordinate conjunction over here? ठीक है. और क्या sentences बना सकते हैं which can be a complex sentence? I will start studying for the test I will start studying for the test a week ahead so that I do not fail. Okay. Why will I start studying before the test, right? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि I will start studying before the test, तो क्यों will I start studying before the test, right? I will start studying before the test क्योंकि I do not want to fail, right? I do not want to fail in my test. That is why I'll start studying a week ahead of my test, right? So that is important over here. Okay, I have to start studying for the test. That is one piece of information. But अगर मैं सिर्फ उतना बोल के छोड़ दूंगी तो no one will understand. So I have to start studying for my test so that I do not fail for the exam. ठीक है, तो यहाँ पे so तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सो, एंड सो इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब कि मेन कंजंक्शन के अलावा द कंजंक्शन दैट यू नीड, जिससे आपको प्रॉपर मीनिंग मिलता है. तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, वी हैव टू ऐड दीज वर्ड्स लाइक सो, इफ and all these words, or even sometimes a comma while writing the sentence, ताकि हमें पता चल सके कि किसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ओके, और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. For example, when he finished reading his book, he returned it to the library. He returned it to the library is a independent clause. ठीक है, अगर मैं बोल दूंगी कि he returned it to the library, तो you will understand कि ठीक है, he returned the book to the library. लेकिन when he finished reading his book is dependent on that action. ठीक है, तो जब एक पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि एक एक्शन दूसरे एक्शन से कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है, when one part of the sentence is attached to the other part of the sentence, then at that point of time we need to know that okay, this is an incomplete sentence if I do not use it over here, right?